Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your social studies teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your social studies class. My dear students, we are on unit number 1, citizenship, and today is its 9th lecture. So, my dear students, before starting the today's lesson, let's quickly look at the student learning outcome or today's objective. Today, the students will be able to explain that attitudes affect and create conflict and peace. तो आज बच्चे जो है कॉन्फ्लिक्ट और पीस को प्रैक्टिकली डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे जो है हमारे एटीट्यूड से या हमारे रवैयों से जो है पीस और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं. एंड द स्किल्स दैट विल बी डेवलप्ड आर recognition and analysis. So my dear student, let's move forward towards refresh your knowledge. So quickly answer a few questions. What are the reasons for conflict? हमने previous lesson में भी पढ़ा conflict और peace के बारे में हम पढ़ रहे थे. तो क्या क्या reasons हैं peer level पे, neighborhood level पे, home level पे आपके जो conflict cause करते हैं? That is always when you disagree with somebody's point of view. आप जब किसी के नज़रिए के साथ आपको इख्तिलाफ होता है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, then the conflict is always there. Next is what kind of attitude create conflict? Obviously, when you disagree and when you are out loud about it, आप अपने डिसएग्रीमेंट का या अपने गुस्से का ज़ोर से इजहार करते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, तो आपका बुरा एटीट्यूड जो है, योर बैड एटीट्यूड, योर नेगेटिव एटीट्यूड कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स. व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड क्रिएट पीस? नाउ टेल मी, पीस कैसे क्रिएट होता है? देखिए, पीस बोलने में ही कितने काम फील करते हैं ना आप. सो द काम एंड रिलैक्स्ड एटीट्यूड कॉजेज पीस. How to promote peace? Always listen to others. जब आप दूसरों को सुनते हैं, सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, and when you listen to others, when you respect others, then there is always peace. Whether it's religion, whether it's somebody's point of view, you have to respect that. So my dear student, now we will move forward towards Islamic perspective. Let's quickly have a look. Verily, the best of the people to Allah are those who begin the greeting of peace. So my dear students, इस हदीस में हमें ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब बंदा वो है जो कि सलाम करने में पहल करता है. So my dear student, now is an activity time. So let's have a look. What kind of behaviors or attitudes lead towards conflict? अब आपको पिक्चर वाइज जो है आप देखें और गेस करें कि किस टाइप का जो एटीट्यूड है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है, आपके कौन से एटीट्यूड जो हैं जो आपके दोस्तों में और आपके घर वालों के दरमियान झगड़े का या कॉन्फ्लिक्ट का बाइस बन सकते हैं. नाउ यू कैन सी 2 boys are making fun of 1 boy. So when you make fun of somebody, here the conflict is here. This is because of your attitude. So when you bully someone, आप किसी को मारते हैं, उसको बुली करते हैं, तो then the conflict happens. ये अक्सर आपने स्कूल में देखा होगा. You even bully your younger siblings. So never do that. When you hit somebody, आप किसी को मारते हैं या अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, then the conflict happens. When you tease somebody, make fun of somebody, when you tell them that you are not good or you are not better, so then degrade somebody. When you are degrading somebody, then the conflict happens. Next, when you push somebody, बिला वजह धक्का दे देते हैं आप. For example, when you are in the canteen line, आप कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, and there's a line, and you start pushing the next person, there's always a conflict. When you make fun of somebody's, किसी के कपड़ों का आप मजाक उड़ाते हैं, the conflict is there. And when you tease somebody, आप किसी को चिढ़ाते हैं, उसको बच्चे अक्सर कर रहे होते हैं ये हरकतें. I often look at kids. They are making fun of each other, teasing each other, and then there's a conflict. The other person gets offended, and then they start fighting. So my dear students, these are all the attitudes that cause conflict. You can pause the video and you can watch these pictures carefully and you can have a look at the attitudes.
एंड व्हेन यू देखिए इसके ऊपर कीचड़ फेंक रहा है, ठीक है, तो ही इज टीजिंग हर, disturbing her, and this will cause a conflict. And he is again making fun of his clothes, his appearance, and this will cause conflict. So my dear students, now I request you all to please open page number 15 in your books. I hope everybody has opened page number 15. Here you can see conflict at workplace. First, look at the pictures. Always whenever you are reading something, try to focus on the pictures given there and try to have an idea that what is the picture describing. So, conflict at workplace, this picture says कि किसी भी काम की जगह पर conflict कैसे हो सकता है when you try to bully someone, make fun of someone, tease somebody, there are competitions, and then you try to degrade someone, then there is always these attitudes cause conflict. Now we will start reading. You have to put your fingers where I will read. Attitudes that affect and create conflict and peace. We will discuss these side by side, both the terms conflict and peace. The environment of mistrust, hostility, and blaming among people, groups, and countries create conflict. It can also be triggered by not giving rights to the people. Conflicts lower the morale of people and encompass disappointments. This morale and dissatisfaction among people compel them to adopt evil means against morality. Disputes involve threats to the well-being of the people. In comparison, tolerance is the key factor to build peace. Urgency is needed in the time of conflict to sit down and resolve it through cooperation. Compromising behavior can defeat battle and prevail in peace. So my dear students, here you have seen that there are two types of behaviors discussed here. One is how we can promote peace, and in one paragraph there is discussed that how the attitudes create conflict. जब आप किसी को respect नहीं करते, when you do not listen to somebody, and when there is mistrust among the groups, even countries, अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री को ट्रस्ट नहीं करता, एक ग्रुप ऑफ पीपल दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को ट्रस्ट नहीं करते, देन एट पर्सनल लेवल यू डू नॉट ट्रस्ट योर फ्रेंड और योर पीयर, देन देयर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट. आपका एटीट्यूड जो है, दिस कॉजेज कॉन्फ्लिक्ट. Countries, even countries, when they are at war, what happens? They do not trust each other. They think that the other country is a question to their security, and then the war begins, the conflict begins. So इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए there must always be tolerance. और इसको हम कैसे sort out कर सकते हैं? By tolerating other, by giving the chance to other person to talk. When you talk and you discuss things, then you can create peace. So here you can see कि आप कैसे पीस को बिल्ड कर सकते हैं कि जब भी आपको लगे कि झगड़ा शुरू हो सकता है, सिट डाउन एंड रिजॉल्व इट थ्रू कॉर्पोरेशन. जब दो लोग जिनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है वो बैठेंगे और बात करेंगे, देन यू कैन ऑलवेज रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इस तरीके से आप सोल्यूशन दे सकते हैं एक मसले का. इसके अलावा कॉम्प्रोमाइज़ करें हमेशा. यू ऑलवेज हैव टू कॉम्प्रोमाइज़. ठीक है, जब दोनों लोग दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज करेंगी अपने अपने लेवल पे, तो दे कैन अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स. सो एटीट्यूड, दिस इज योर पॉजिटिव एटीट्यूड which can create peace, and your negative attitude can create conflict. So my dear students, let's wrap up the lesson. Intolerant behaviors are the cause of conflict. ठीक है, tolerance always create peace. Intolerance, आपके अंदर जब बर्दाश्त नहीं होती किसी चीज की,
then there is always conflict. और intolerance कब होती है? When you have a negative attitude. Patience, cooperation, and acceptance are the attitudes that we should adopt for promoting peace. ये तीन चीजें जो हैं ये आपको पीस की तरफ लेके जाती हैं. एंड वन वर्ड, इफ इन वन वर्ड आप इसको डिस्क्राइब करें तो दैट इज टॉलरेंस, जिसके अंदर एक्सेप्टेंस भी आ जाती है, कॉपरेशन भी आ जाती है, कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर भी आ जाता है. तो दे विल कॉज पीस इन द सोसाइटी. So my dear students, your homework for today is you have to discuss these questions with your parents. How can we promote peace? What kind of behaviors should be avoided? Should we avoid? Sorry. What kind of behaviors should we avoid? Which attitude can make society a better place to live? ठीक है? ये 3 questions हैं. Pause the video and go and discuss them with your parents. आप अपने बड़े बहन भाई से भी discuss कर सकते हैं. And this will also cause awareness in your siblings. ठीक है? उनको भी पता चलेगा कि कैसे हम conflict को avoid कर सकते हैं. So my dear student, next is a worksheet, conflict resolution. आपको यहाँ पर दिया हुआ है, everyone gets into conflict. It happens when you want something and another person wants something else. How well you can resolve a conflict, your attitude has a lot to do with it. Here are 4 types of attitude and how they each resolve conflicts. ठीक है? So my dear students, आपको 4 तरह के यहाँ पर attitudes दिए गए हैं. Aggressive behavior, then there is passive behavior, then there is passive aggression, and then there is assertive. ठीक है? ये 4 types of attitudes and behaviors हैं. आपको इसके अंदर से सॉर्ट आउट करना है कि कौन से बिहेवियर्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करेंगे और कौन से बिहेवियर्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाएंगे. आई विन, यू लूज, नेवर गिवन, इट्स नॉट इनफ दैट यू विन, द अदर पर्सन हैज़ टू लूज. ठीक है? एक तो ये एग्रेसिव बिहेवियर होगा. देन ऑलवेज गिवन, टू कीप द पीस यू इग्नोर योर ओन नीड्स. देन आई लूज, यू विन, usually give in but figure out a way to sabotage the other person. You do not really care if you win as long as the other person loses too. Compromise is in order to get most what you want. You stand up for yourself but you want the other person to satisfy too. So the assertive behavior is the best behavior, which I think. You have to again pause the video, thoroughly read them, and then pick out the best one. Now you have to answer these questions according to those behaviors. Which of these attitudes is the best for resolving conflicts so that they stay resolved? Why? आपको अगर assertive behavior best लगता है तो you also have to give the reason for that. Which of these attitudes is the hardest to deal with and why? इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा negative behavior है और क्यों है? You have to write it down. Which attitude is the hardest one to keep if you are in a conflict and why? अब अगर कोई झगड़ा हो जाए तो कौन सा बिहेवियर जो है वो रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और क्यों? So my dear students, this is it. Thoroughly read it and then fill in the worksheet. So my dear students, in the next class, we will learn the conflict resolving methods. ठीक है? अब अगली क्लास में हम वो methods को पढ़ेंगे जिनसे अगर आपका झगड़ा हो भी जाए तो how we can solve them and how we can sort out the problems. So my dear student, until then, keep everybody around you safe. Have a good day and Allah Hafiz.